हैदराबाद में ताड़ी का कहर, 2 की मौत, 28 अस्पताल में, 3 की हालत नाजुक। इस्लाम को जानो और अरबी सीखो, इजराइल ने अपनी सेना को दिया आदेश, क्या है नेतन्याहू की रणनीति। दिल्ली में अचानक तेज बारिश ने बढ़ाई लोगों की समस्या, कई जगह जलजमाव और जाम, मौसम विभाग का रेड अलर्ट। बिहार में ग्रामीण सड़कों के लिए 76,000 करोड़, केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने दी जानकारी। हरिद्वार में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की उठी मांग, कांवड़ निर्माण पर संत समाज की सख्ती। 15 दिन पहले जागा होता प्रशासन तो 12 लोग नहीं गंवाते जान, वडोदरा ब्रिज हादसे का कौन जिम्मेदार। गोल्ड खरीदने का गोल्डन चांस, 24 घंटे में सस्ता हुआ सोना गिरकर अब इतनी रह गई 24 कैरेट सोने की कीमत। नागपुर में भारी बारिश से 71 गांवों का संपर्क टूटा, एक युवक की मौत, एक अन्य बाढ़ से बहा। यूपी एसटीएफ के हत्थे चढ़ा झांगुर बाबा, धर्मांतरण का चला रहा था नेटवर्क, चौंकाने वाले खुलासे। क्या विपक्ष घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में लाना चाहता है, रविशंकर प्रसाद का बिहार बंद पर तीखा हमला। 5 किमी से दूर हुआ स्कूल तो छात्रों को मिलेगा 6,000 का भत्ता, छात्र छात्राओं दोनों को मिलेगा लाभ। वडोदरा ब्रिज हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत, विपक्ष ने बीजेपी सरकार से पूछा पुल क्यों गिरा। चीन का सबसे बड़ा बांध भारत के लिए वाटर बम, अरुणाचल के सीएम खांडू ने चेताया। पाकिस्तान स्थित कश्मीरी आतंकवादी हैंडलर टॉप कमांडर पर पुलिस का बड़ा एक्शन, जब्त की गई जमीन। गोरखपुर में बेरहम बहू ने सास पर ढाया जुल्म, बेरहमी से की पिटाई, पुलिस जांच में जुटी। लालू यादव को लगा बड़ा झटका, देवघर कोषागार घोटाले में सजा बढ़ाने वाली सीबीआई की याचिका को हाईकोर्ट की मंजूरी। पीएम मोदी को नामीबिया का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविचिया मिराबिलिस से नवाजे गए। बिहार बंद में 17 जगहों पर रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों को प्रदर्शनकारियों ने बनाया निशाना, कई ट्रेनों का परिचालन हुआ बाधित। अब नामीबिया में भी यूपी से हो सकेगा पेमेंट, पीएम मोदी के दौरे में हुआ लाइसेंसिंग समझौता, इन मुद्दों पर भी बनी सहमति। इस दिन 1,227 करोड़ बहनों के खाते में आएंगे 1,500 रुपए, सीएम मोहन यादव ने दी नई सौगात। इराक पर 30% तो फिलीपींस पर 25% टैक्स, ट्रंप ने अब इन 6 देशों पर फोड़ दिया टैरिफ बम। हरियाणा के नूह में सौतली मां ने नाबालिग बेटे से की कोर्ट मैरिज, पीड़ित पति दर दर भटक रहा। 32 करोड़ से ज्यादा लोगों के पीएफ अकाउंट में सरकार ने भेजा ब्याज का पैसा, आपके खाते में आया कि नहीं, ऐसे करें चेक। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार के साथ ये हो क्या रहा है, कौन है वो महिला जिसके वोटर कार्ड ने कटवा दी नाक, बीएलओ बोले चुप रहो। धरती पर आज 24 घंटे से कम का होगा दिन, इस अनोखी घटना की गवाह बनेगी दुनिया, जानिए क्या होगा असर। नवादा में जदयू का अस्तित्व समाप्त, राजद में शामिल हुए पूर्व विधायक कौशल यादव, तेजस्वी को पहनाया सोने का मुकुट। प्रेमी से शादी की जिद कर रही बहन का हत्यारा बन गया, भाई पत्नी संग मिलकर उतार दिया मौत के घाट। बिहार बंद का असर मुजफ्फरपुर में दिखा, व्यापारियों को लगा 50 करोड़ का झटका। अमेरिका से हथियार मिलते ही जोश में आया, यूक्रेन कमांडर का आदेश, तुरंत हड़प लो रूस का ये इलाका। आधार कार्ड पहचान पत्र का डॉक्यूमेंट नहीं, इन दस्तावेजों को मिली मंजूरी, यूआईडीएआई प्रमुख का बड़ा बयान। खगड़िया में शराब के नशे में चंदन जाने जमकर काटा बवाल, पत्रकार ने पूछा कहां मिला, कहां तिक्रम मत करो, जय सियाराम। ब्रिक्स में घुसने का तुर्की का सपना, भारत चीन ने तो खलीफा बनने के सपने हुए चूर, पाकिस्तान से गलबैया उइगर का समर्थन बना कारण। अब पूरे भारत में चलेगा एलन मस्क का इंटरनेट, स्टारलिंक को मिली हरी झंडी, जियो को सीधी टक्कर। लाल किले पर पहली बार शहीदी दिवस पर होंगे कार्यक्रम, दिल्ली कैबिनेट ने दी मंजूरी। आरएसएस प्रमुख ने की दिवंगत मोरोपंत पिंगले की सराहना, कहा विनम्रता और दूरदर्शिता के थे प्रतीक। सर जी सपने स्किप नहीं, सिप करो। सिंपली विजिट kotakmf.com/MrSIP और सीखो SIP के साथ कैसे हो सकते हैं आपके सपने पूरे सिस्टमैटिकली। और आप
म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Definitely check out called VPN Master Pro, which allows you to basically encrypt your internet connection and of course create a secure connection to the websites you visit and stuff like that, and remain anonymous online, because there are lots of trackers and advertisers and stuff like that, cookies and tracking mechanisms that would keep track on the websites you visit and how long you stay there and stuff like that, from what device you visit and whatever. And it's best to have a little bit of security online. The application I'm talking about is called VPN Master Pro. It's available on vpnmasterpro.com, and it's available for Windows, Linux, and even macOS and iOS, so you can definitely check it out. Now on the App Store it looks like this. It's called VPN ... for some reason, but the real name of the application is VPN Master Pro. Now the application is free. They do have paid plans if you want more locations or faster speed and stuff like that, but there are free locations you can try today. And they also enforce a 100% no-log policy. We're going to get into that in a second. Now, for those of you who do not know what a VPN is and why you would get that, it's basically an application that changes your IP address, your device's private address, into a different one, so that the websites you visit, the trackers online and stuff like that, will believe that you are visiting from a completely different country, and thus keeping you anonymous online and of course protecting your privacy, because every website you visit will actually store your private IP address. That's how internet works. Your device communicates its IP address in order to receive the data. However, from the IP address you can tell the location, even the general area like your city, even down to the block sometimes, and of course the country and stuff like that, even the data about what kind of device you're using and whatever is being sent when you're visiting a website. So trackers and advertisers and stuff like that can definitely keep track of your connection, what you visit and whatever, to serve you ads, and even to monitor your activity online. So with a VPN you can easily protect your privacy by changing your location when you're visiting websites. The application changes it in the background. You can browse the internet normally, and you just basically have to enable the app, and that's it. If you want to read more about how VPNs work, or virtual private networks, you can definitely check out the Wikipedia article over here. A short snippet is basically this, quote, "A virtual private network, or VPN, is a mechanism for creating a secure connection between computing devices and a computer network, or between two networks using an insecure communication medium such as the public internet." So let's see VPN Master Pro in action. I have my iPhone connected over here, and I have the application installed. When you install it, it's just called VPN, and this is the application in the App Store, VPN ... You can try to search for VPN Master Pro as well, and as I said, they basically employ a 100% no-log policy, which is important, because if you don't use a VPN that doesn't store logs, then you run the risk of being spied on by the VPN itself. So definitely always choose a VPN with a strong privacy policy, and of course with no logs policy. So let's see the VPN in action. This is the VPN application. Once you open it, it looks like this. Very simple interface, very easy to use. You have a big contact support button in there if you need to contact support. Then in here down at the bottom we have the locations. There are a couple of free ones, for example South Carolina, United States of America, London, UK, Brazil, Finland, and even Singapore, USA, and stuff like that. There are a couple of free locations that you can get even without having a paid plan on the application, but then if you want more, you can unlock them with a paid plan. And as you can see, there are lots of locations over here. You can even set locations as favorite, and once you have one that you like, you pick it and it connects, and that's basically it. I'm now connected, and my device believes it's now in Poland, which means that every website that I actually go to will believe I am in Poland, which is nice. But if you want to change the location, everything you have to do is to just choose another location, and that's it. It's gonna connect in a couple of seconds, and now your device will send a completely different IP address, protecting your real one. Now if you go down in here, you can see that on the top of the device in there in the status bar, we have a VPN badge, which means that right now we are connected through a VPN, which means that our IP address is secure. If you want to disconnect, you press in here on the connected button and it will disconnect. And as you can see, the VPN badge is no more. But at this point, your IP address will actually leak. So if you go to a website, they will know your real IP address. Now, once you're connected, you will basically have the VPN IP address, which is completely different compared to your own. You can also do a speed test by pressing that button over there. You press start speed test. And as you can see, I do have a pretty good speed over here. And here on the locations, you can even see the ping or the latency towards every single location. You should definitely pick the one with the least latency in order to have better speed and to have pages load faster. But VPN is never about speed. VPN is about privacy and of course being
being anonymous online. There is also a small minigame in here. If you press in here, it says world's hardest puzzle game. Only 1% can solve. You press play game in here and you have to choose basically the words over here so that you can create a world. So you do it like this and stuff like that. It says it's below actually, so I didn't score anything. You can play again and stuff like that. So I can do baked like this, and that worked and stuff like that. So you can see that I have scored 10 and whatever. You can share your score. The mini game is available in there, and there are also the tops in here. You can see your leaderboard and the recent, and there is also the global leaderboard over here that you can see with all the users and their score. Just a little bit of a game that you can play inside the application. So that's it with the application. It's as